आला गुढी पाडवा आला गुढी पाडवा आला गुढी पाडवा आला गुढी पाडवा. नमस्कार सर्वांना. मी पंडित शांताराम राजू म्हणजे मिल्ल्यास मराठी सभा मंदिराचे मुख्य पुरोहित आहे आणि मॉरिशस महामंडळी फेडरेशनचे मुख्य पुरोहित म्हणून मी तुमच्याशी गुढीपाडव्याबद्दल काही माहिती देण्याचे प्रयत्न करतो. तर यावर्षी क्रोधीनाम संवत्सर आम्ही सादर करूया. क्रोधीनाम संवत्सर सोमवारी 8 एप्रिलला संध्याकाळी 10:20 सुरुवात होत आहे आणि 9 एप्रिलला संध्याकाळी 7 वाजता समाप्त होत आहे. तर उदय तिथी अनुसार पंचांगानुसार आम्हाला सूर्योदयाला संवत्सर म्हणजे क्रोधीनाम संवत्सर सादर केला पाहिजे. तर यावर्षी 9 एप्रिलला आम्ही मिल्ल्यास मराठी या सभेत आम्ही नॅशनल लेवलवर आम्ही इकडे गुढीपाडवा सादर करत आहोत. तर गुढीपाडवा म्हणजे काय? गुढीपाडवा म्हणजे नवा संवत्सर. तर यावर्षी 28 म्हणजे 38 संवत्सर जे आहे क्रोधीनाम संवत्सर आम्ही इकडे या मंदिरी सादर करूया. तर संवत्सर म्हणजे काय? तर सर्व मराठी लोकांचे म्हणजे हिंदू लोकांचे नववर्ष. सर्व हिंदू लोकांचे या दिनी नवा पंचांग सुरुवात होतो. तर cette année-ci, nous pouvons célébrer Gudi Padwa, Crodinam Salvatore, au siège de Midlands Marathi Sabha, et en collaboration avec Mauritius Marathi Mandeli Federation, Mauritius Marathi Cultural Center Trust et Marathi Speaking Union. Nous pouvons célébrer Gudi Padwa mardi le 9 avril au lever du soleil. Et cette année-ci, nous pouvons célébrer le 38e Salvatore, qui nous a dans 60 Salvatore qui nous a, c'est le 38e Salvatore. Et nous pouvons célébrer Crodinam Salvatore, qui est un Salvatore qui n'est pas trop correct, trop auspicieux pour cette année-ci. Mais quand même, ça, nous avons trois yogas qui peuvent former pour certaines bandes horoscopes. Right? Nous avons Sarvata, Raj Siddhi Yoga, Amrit Siddhi Yoga et Shash Yoga. Ces trois yogas-là qui peuvent former après 30 bandes, après 30 ans, nous pouvons gagner ce yoga-là. Pour un certain horoscope qui ne peut pas pour mentionner cela, nous pouvons garder le Gudipadwa qui peut bénéficier de sa yoga, ces trois yogas qui peut former pour apporter Gudipadwa. Et Gudipadwa, c'est une fête que nous célébrons tout ensemble avec la famille. Nous célébrons autour de l'île Maurice, dans tout un village. Nous célébrons avec la famille et nous mettons un goudi devant nous la porte. Et ce goudi-là, mon ressortir qui nous faisait finir avant le coucher du soleil dans l'après-midi. Sinon, tout nous la prière, c'est qu'il nous fait faire pour ce jour-là d'y aller dans l'eau. सूर्योदय झाल्या पहिले नंतर आम्हाला गुढी उतरायला पाहिजे. कारण या दिवशी ब्रह्मदेव qui crée, d'après ce qu'il nous racontait dans le Puran, dans le Ved, Brahmadev qui crée l'univers à ce jour-là. Et à partir de ce jour-là, c'est Sanvatsar qui a commencé. Et c'est pour ça que nous faisons Brahma Dhwaj Puja. Tout le monde fait Brahma Dhwaj Puja devant la porte, que nous ensemble avec la famille. तुम्हा सर्वांना नमस्कार. मी तुम्हाला मिडलँड्स मराठी सभेचे तर्फे तुम्हा सर्वांना गुढीपाडव्याचे अभिनंदन सांगते. कडुनिंबाची चटणी तयार करण्यासाठी आम्हाला निंबाचे पानं, मग चिंच, मिरची स्वाद अनुसार, थोडेसे मीठ व साखर हे 5 पदार्थाने आम्ही निंबूची चटणी तयार करते.
पहिले आम्ही निंबाचे पानं घेऊया. सगळे धुवून झाला. आम्ही जशी आमची वरील शिलावर आता आम्ही मुलीनेक्स वापर करतो, पण आधी आम्ही शिलावर आपली चटणी वाटूया. आपले गुरुजी कधी म्हणाले आहे की गुढीपाडवाचा दिवस हे विशेष चटणी वाटायचं, कारण यातला 5 विशेष पदार्थ आम्ही त्याचे मिश्रण करून चटणी वाटायचं. म्हणजे आपल्या जीवनात कधी गोड, कधी आंबट, कधी तिखट, कधी खारट, या सर्व आमच्या जीवनाचा सार आहे. तर हे पानं फार दुरून आली आहे. तुम्ही चिंच पण घालू शकता, चिंच नाही तर आंबा पण, जे काही आंबट पदार्थ आहे तुम्ही घालू शकता. नंतर मिरची, मिरची आम्ही स्वादानुसार घालते, कारण मुलांना पण वापरायचे असते. कारण नीम कडू असते ना, त्यासाठी आम्हाला त्यामध्ये साखर घालते. तर हे पहा, आपली चटणी तयार झाले. आशा करते की तुम्हा सर्वांना ही चटणी आवडेल. Namaskar à tous. À l'occasion de Shri Kodi Nam Samvatsar Gudi Parwa 2024, le Midlands Marathi Sabha est notre plaisir pour accueillir toute la communauté Marathi à Midlands chez nous. Aujourd'hui, nous vous procèdons avec toute une étape comment nous organisons Gudi Parwa 2024 chez nous à Midlands. Mon équipe et moi-même, nous vous montrons aujourd'hui toute une étape qui nous suit quand nous faisons un rangoli. Un rangoli, c'est un art à la fois lié sur l'aspect artistique, mais il y a aussi un aspect spirituel. Nous servons un rangoli, nous mettons devant la porte, les orner avec du riz, les capables avec grains secs, les capables avec des fleurs et la poudre couleur, avec la poudre de holy et tout. Nous nous l'entrée la porte dans l'idée pour accueillir Goddess Lakshmi Kotnu. Un rangoli lui représente l'abondance, la prospérité et bonheur. Comme Gudi Parwa, c'est l'année de tout un hindou, c'est l'occasion pour nous nous l'entrée et que nous pouvons mettre nos goodies avec un joli rangoli. Rangoli, l'y fait à travers l'aine. Nous, nos grands-parents, ils apportent à Maurice et aujourd'hui, nous, notre jeune génération, nous pouvons maintenir sa culture là. Aujourd'hui, nous vous montrons étape par étape processus comment nous faire un rangoli. Pour commencer, nous finalisons le dessin qui nous tient envie de faire nos rangoli. Ce dessin-là, il est capable de faire par différentes techniques. Il est capable de faire à travers un measurement, à travers un point, à travers la code, comment nous pouvons montrer comment nous pouvons faire nos dessins. Et il est aussi capable de faire un freehand design. Une fois que nous finissons nos dessins, l'autre étape très importante, c'est le choix de couleurs. Le choix de couleur d'un rangoli, c'est très très crucial. Un rangoli est bien bright, avec une couleur qui est bien vif, qui donne beaucoup de lumière, qui donne beaucoup de fraîcheur aussi. Par contre, il n'est pas capable avec une couleur qui terne, qui sombre et noire. Par exemple, nous ne pouvons pas servir la couleur marron, ni la couleur noire, ou une couleur qui
pas d'une chambre à nos rangolis. Ça bonne couleur-là, je peux retrouver dans nos rangolis aujourd'hui. Pour nous gagner moins de couleurs dans nos rangolis, nous servons du riz, nous sommes capables de servir ground rice, nous sommes capables de servir greux, nous sommes capables aussi d'acheter moins de couleurs de riz qui sont available pratiquement partout. Et aujourd'hui, nous servons technique de riz coloré. Nous servons du riz normal, ce qui était dans de suite, nous mélangeons avec différentes couleurs. Cette couleur-là, je suis capable aussi de servir des food colors pour lui paraître bien bright. Comment je suis capable aussi de servir holly, couleur holly, je suis capable de servir abir, kumkum, sindoor. Nous pouvons mélanger nos rangolis, nous pouvons prendre du riz et nous pouvons prendre une couleur, nous pouvons prendre un petit peu d'eau et graduellement, nous pouvons mélanger de couleur et le riz jusqu'à ce qu'il nous atteigne la couleur désirée. Une fois qu'il nous ajoute de l'eau et couleur dans le riz, il est assez humide, il est moist. Donc, il est très important pour nous capables de manier ça du riz là dans nos rangolis. Il est bien assez fluffy, il est bien libre. Donc, nous pouvons bien laisser sécher. Normalement, temps de séchage, il dépend de la quantité de l'eau qu'ils ont mis dans notre rangoli. Donc, petit conseil, c'est qu'ils ne pas mettre trop beaucoup de l'eau. Vous êtes capable de réduire le temps d'attente qu'ils ont du riz sec. Vous êtes capable de commencer le travail. Comment vous êtes capable de constater que faire un rangoli n'est pas une tâche facile. Il demande beaucoup de précision, il demande la dévotion de la personne et aussi nous besoin un travail d'équipe. Ça ne se fait pas seul, surtout si nous avons envie d'aller vers un rangoli qui est assez grand. Puisque à la base même, rangoli, c'est pour accueillir Goddess Lakshmi, accueillir tout le bonheur, l'abondance et la prospérité, nous mettons dans l'entrée la porte. Namaskar, Chandana. Aujourd'hui, nous sommes là pour Gudi Parva. Nous avons envie de montrer qu'il y a un nouveau cantoli, les couilles gâteau cantoli. Aujourd'hui, nous allons montrer qu'il y a un nouveau ça, mantègue. Premier d'abord, nous allons mettre mantègue avant. Et puis, nous pouvons mettre sur un petit ingrédient, c'est qu'il y a raisin, il y a badam, il y a le gelé, il y a l'aïchi, il y a sotilani, il y a jisik, il y a safran. Ça, la poudre de coco. Jiri, ça, nous avons grillé avant. Nous voulons faire les rose, là nous commençons à cuire nos cantoli. Nous vais griller du riz là, nous faire les rose, là nous chercher, nous attendons faire les frais, là nous craser. Premier, nous vais mettre un petit peu de mantègue, sans mantègue, on fait les frais un petit peu. Après, nous mettons mes petites épices, ça, un petit peu de badam. Ça, de l'eau. Ça, c'est de l'eau. Ça, c'est du sucre. Satilani, sezerane. Un petit peu l'aïchi. Ça de gelée, une cuillère de gelée. Ça un petit peu de safran, de une petite couleur.
les sucrés là-dedans, on fait ce qu'il fait. Oui, mettre un petit peu de safran encore, il manque un petit peu de safran. Je vais un petit peu de cuillère. Un petit peu de gelée encore. Les sucrés. Et puis, à ce moment-là, nous commençons à mettre nos diri, c'est que nous avons déjà fini de griller, nous écraser. Et puis, les mille comme ça. Un petit peu de ça. Et nous ajoutons du coco. Nous ajoutons un petit peu de coco en lui. Et là, nous cantelines pareil, comme ça. Et bien, fini sec. Parce que là, nous vous mettons dans un petit plateau. Nous arrosons. Quand nous cantelines pareil, je vais mettre dans la réception là, faire les carrés bien jolis. Polir. Pour Lily là, on fait le bien. Après, nous arrosons un petit peu de coco, le lit. Ça veut dire nous quand le lit finit par et puis là, nous allons mettre un petit peu de coco, le lit, nous décoller un petit peu. Namaskar. Pour la célébration de Gudi Padwa 2024, l'association de Midlands Marathi Sabha et Clinique chez Krishna Mandir regroupe Zaban artistes pour faire le Ganesh Vandana. The people perform le danse Moria Vinayaka. Ban artistes nous joignent ici même à Midlands Marathi Sabha, donc le soir, que nous rehearsons 3 fois par semaine, donc nous faisons le soir, 19h à 21h. Et pour monter là, nous avons plusieurs bandes vidéos sur YouTube et même bandes artistes là aussi, bandes steps qui sont là. Donc nous mettons tout ensemble pour nous faire ça danser là. Nous nous mettons la main ensemble pour préparer les props et les costumes et pour la préparation.
Sarvana Namaskar. Moi, c'est M. Nanjay Balou, président Midland Marathi Sabha. Et moi, accueillir toute la communauté hindoue et marathi pour célébrer Gudi Padwa national 2024 à Midlands. Et M. Djotou la bienvenue. Et en principe, il y a une grande fierté pour nos sociétés Midland Marathi Sabha. Nos sociétés, cette année-ci, peut faire 51 ans l'anniversaire. Mais ça a une grande fierté pour nous qui aujourd'hui, après 50 ans, bien dire, nous avons une nationale à Midlands. C'est une grande fierté pour la communauté marathi à Midlands. Et M. Djotou, bonne fête. Et je t'amuse bien pour Gudi Padwa. Et surtout pour Gudi Padwa, c'est nous l'année principale. Pour Gudi Padwa, nous visons toujours le matin, nous faisons la prière, le 9, et nous visons mettre un linge neuf qui nous vient acheter. Et nous visons faire la prière le matin, nous mettons nos goodies debout et nous commençons l'année en beauté. Et le 9, le matin, à 8h, le siège de Midland Marathi Sabha, nous pouvons commencer nos puja, 8h, nous pouvons terminer vers 11h, 11h30, et nous pouvons Mahaprasad qui nous peut servir ça. Ensuite de ça, le programme culturel peut commencer 4h, et nous pouvons terminer vers 18h30. Après ça, nous prenons Mahaprasad, et surtout, mon oublié, ce programme-là pour faire dans Midland Multipurpose Complex, il trouve à côté la station de police de Midland. Au nom de Midland Marathi Sabha, je remercie ces trois bodies-là, c'est Mauritius Marathi Mandali Federation et Centre culturel et Speaking Union pour cette collaboration avec Midland Marathi Sabha pour nous organiser ça Gudi Padwa National Level 2024. Et M. Djotou, Gudi Padwa, Abhinandan. जसे तुम्ही पाहत आहात इकडे रांगोळी काढण्याचे पद्धत होत आहे. जसे जेव्हा आमचे गुढी तयार झालेला आहेत तेव्हा आम्ही इकडे या सुसजवलेल्या जागेत आम्ही आपली गुढी उभारतो. गुढी इसी avant nous faire rangolie, nous finit décoller, nous finit faire une place sushobhit. Après là, nous mettons nos गुढी ici, nous mettons nos गुढी debout. बरं, गुढी उभारण्यासाठी आम्हाला 10 ते 12 फूट न सुकलेला बांबू पाहिजे. तर हे आहे आमचे न सुकलेला 10 ते 12 फूट बांबू. या बांबूला आम्ही वस्त्राने किंवा रिबॉनी आम्ही सजवतो. तर तुम्ही पाहत आहात इकडे सभेचा पुरुष वर्ग म्हणजे या बांबूचे सजावट करीत आहेत. निरनिराळ्या रंगाचे रिबॉन आपण हा बांबूला सजवण्यासाठी आपण वापर करीत आहोत. गुढी उभारण्याची बांबू लगभग तयार झालेला आहे. तर हे पहा आमचे सुसजून तयार झालेला गुढी उभारण्यासाठी बांबू. तर हे आहे आमचे न सुकलेला बांबू सुसजवलेला. आता आम्ही यावर आपले गुढी उभारण्यासाठी पदार्थ जे आहे म्हणजे कडुनिंबाची पानं आणि मंगलतोरण म्हणजे आंब्याची पानं आम्ही इकडे बांधूया. बरं, हे तुम्ही पाहत आहात कडुनिंबाचे पानं आहे इकडे आणि आंब्याचे पानं. कडुनिंबाचे पानं कडू असलं तरी आमच्या जीवनात आमचे पोषण पालन ते करतात. ते औषधी रूपही आहात आमच्या जीवनात. आणि आंब्याचे पानं म्हणजे मंगल आमच्या जीवनात मंगल व्हावं या निमित्ताने आम्ही गुढीमध्ये आम्ही आंब्याचे पानं बांधतो. आता म्हणजे भगवा वस्त्र नाही तर इतर वस्त्र आम्ही बांधूया. इकडे एक साडी आहे.
तर आमचे वस्त्र जे आहे म्हणजे साडी इकडे आम्ही वापर करीत आहोत. निर्णय काढून झालेला आहे जसे तुम्ही पाहत आहात. आता आम्ही या बांबूवर बांधूया. बरं, इकडे आमचे सभेचे सचिव सौभाग्यवती विदुषी बाया आणि त्यांचे पतिदेव श्री राकेश बाया हे वस्त्र जे आहेत गुढीवर बांधत आहेत. आता गुढीला वस्त्र बांधून झालं. आता गुढीला सजवण्यासाठी आम्ही पुष्पमाळ घालणार आहोत. आता आमचे गुढी जे आहेत पुष्पमालाने सजवलेले आहेत. आता या म्हणजे वस्त्राला आम्ही थोडासा साखर जे आहे आणि इरा जे आहेत आणि नाणे जे आहेत म्हणजे l'argent याला आम्ही बांधूया. ठीक, आता साखर बांधून झालं, नाणे बांधून झालं, इऱ्या बांधून झालं. आता आम्ही कलश जे आहेत आम्ही या बांबूच्या वर घालूया. कलश म्हणजे ब्रह्मलहरी म्हणजे गुढीपाडव्याच्या दिवशी ब्रह्मलहरी अधिक प्रमाणात धरतीवर येतात. तर या कलशात ते समावेश होऊन आम्हा भक्तावर ते आम्हाला ते त्याचे ज्या लहरीचा जे शक्ती आहे आम्हाला प्राप्त होतो. तर कलश जे आहेत आम्हाला स्वस्तिकने आम्हाला सजवायचं आहे. स्वस्तिक म्हणजे मंगल प्रतीक. आता तुम्ही पाहत आहात आमचे कलश सर्व बाजूने स्वस्तिकाने सजवलेला आहेत. आम्ही आता हे कलश जे आहेत आम्ही बांबूच्यावर ठेवूया. हे आहे आमचे सजवलेला कलश म्हणजे स्वस्तिकने आमचे कलश सजवलेला आहे. हे कलश जे आहेत आता आम्ही बांबूच्यावर ठेवूया. गुढी म्हणजे न सुकलेला बांबू, सुसजवलेला न सुकलेला बांबू, कडुनिंबाचे पाने, आंब्याचे पानं, निऱ्या काढून वस्त्र. इकडे आम्ही एक साडी घेतलेला आहोत आणि पुष्पमाल आणि या वस्त्रात आम्ही साखर, नाणे आणि इरा पण बांधलेला आहेत इकडे. आणि बांबूच्या वर आम्ही कलश ठेवलेला आहोत. तर इकडे आमचे गुढी म्हणजे तयार झालेला आहे. तर मगाशी जसे तुम्ही पाहिलात होता की आमचे महिला मंडळ मंडला स्मार्ट सभेचे महिला मंडळ ते रांगोळी सजवित होते जिथे आम्ही गुढी उभारणार आहोत. तर इकडे रांगोळी आहे, सुसजवलेली रांगोळी, आणि तिकडे आम्ही आपले गुढी जे आहे आम्ही उभारणार आहोत. आमची गुढी तयार होऊन इकडे उभी आहे. तर आम्ही ब्रह्मध्वज पूजन करूया. जसे तुम्ही पाहत आहात आमचे सर्व मंडळी, महिला मंडळ, मिलेनियम स्मार्ट सभेचे सर्व महिला मंडळ आणि पुरुष वर्ग इकडे आहेत. आम्ही एक होऊन ब्रह्मध्वज पूजा करूया. तर स्वानी म्हणावा, ओम ब्रह्म ध्वजाय नमः.
गुढी उभारल्यानंतर आम्ही ब्रह्मध्वजाला पंचोपचार विधीने म्हणजे धूप दीप दाखवून आणि नैवेद्य वाहून नैवेद्य दाखवून फळे वाहून आणि कडुनिंबाची खासकर कडुनिंबाची चटणी ब्रह्मध्वजाला अर्पण करून आम्ही ब्रह्मध्वजाशी पूजन करतो. आम्ही म्हणतो की हे ब्रह्मध्वजा या संवत्सर म्हणजे क्रोधी नाम संवत्सरात तुमचे स्वागत असो आणि आम्हाला सदैव तुम्ही आमच्या पाठीशी राहायचं आणि आम्हाला कृपादृष्टी तुमचे सदैव आमच्यावर राहावं आणि तुमचे आशीर्वाद आमच्यावर सदैव राहावं. या निमित्ताने आम्ही ब्रह्मध्वजाला प्रार्थना करतो. सुख समृद्धी नांदो देवा नवीन वर्षाला, तेजोमय सुरुवात होऊ दे नवीन पाडव्याला. आला गुढी पाडवाला, आला गुढी पाडवाला, आला गुढी पाडवाला, आला गुढी पाडवाला.